लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका फिर से स्वागत है विवेकानंद आंसर्स में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जयंत कृपलानी और आज हमारे साथ है रिवर्ड स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन वडोदरा। स्वामी जी, लास्ट एपिसोड में हमने जो मुद्दा उठाया था वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के लिए, खास तौर पे हमारी युवा पीढ़ी के लिए, लीडरशिप क्राइसिस एट वेरियस लेवल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम मानी जाती है। Who should they follow? Who should they look up to? Who should they draw inspiration from? आप में से कुछ इस कहानी को तो जानते ही होंगे, but I'm tempted to narrate this story yet again. Actually, स्वामी विवेकानंद जी ने ही ये एनेक्डोट बताया था अपनी जिंदगी से। विवेकानंद जी का एक अंग्रेज दोस्त था जिसका नाम था जनरल स्ट्रॉन्ग, जो सिपॉय म्यूटिनी के टाइम पे इंडिया में था, और वो हमेशा उस टाइम के बारे में बहुत बातचीत करता था। तो एक दिन स्वामी जी ने उससे पूछा, भाई सिपॉयज के पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र थे, वो सब इतने प्रशिक्षित थे, उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस था, अरे फिर भी वो क्या वजह थी कि वो हार गए? तो जनरल स्ट्रॉन्ग ने जवाब दिया कि उन सिपाहीज के जो लीडर्स या नेता थे वो सामने नहीं आते थे, वो सब पीछे सेफ जगह में खड़े होकर सिर्फ आदेश देते थे और कभी कभी कहते थे फाइट ऑन ब्रेव लैड्स, फाइट ऑन, ऐसा कुछ बकते थे। लेकिन जब तक कमांडिंग ऑफिसर खुद मौत का सामना नहीं करता, फुट सोल्जर्स कभी भी अपनी जी जान लगा के लड़ाई नहीं लड़ता। सिंपल। जिंदगी के हर क्षेत्र में एक ही बात लागू होती है। कहा जाता है अ कैप्टन मस्ट सैक्रिफाइस हिज हेड। आप तभी एक सफल नेता या लीडर बन सकते हैं जब आप एक उद्देश्य के लिए अपनी जिंदगी देने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। When you can lay down your life for a cause, that's when you become a leader. ये बड़े दुख की बात है कि हम सब लीडर्स तो बनना चाहते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है हम। नहीं, ऐसी लीडर को कहीं भी नहीं सुना या माना जाता है। नहीं, हम लोग इसी कहानी और मुद्दे को लेकर हाजिर हुए थे भारतीय वायुसेना के प्रधान एयर चीफ मार्शल अरूप राह के पास। Incidentally, he grew up in a family of Ramakrishna Vivekananda disciples. Ideal leadership के बारे में उनका क्या विचार है, जान लेते हैं। Namaskar. My greetings to all my countrymen on this very special occasion of the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda, one of the greatest sons of contemporary India. It's a great honor and a privilege to be part of this program, which is being organized to showcase the life and achievements and the work of this great spiritual leader of India. So we asked him, how are Swamiji's teachings and ideologies relevant in today's military life? And he said, Yeah, as you mentioned, Bhagavad Gita, one of the most important
scriptures of Indian culture, which teaches us how to deal with challenges and conflicts in life. As you all know, it was created or it is given by the God to human beings in the battlefield of Kurukshetra. And you also mentioned that Swami Vivekananda always quoted from the scriptures of Bhagavad Gita, which is so relevant in dealing with day-to-day affairs and challenges in normal life. And obviously, since it came from the battlefield, it relates to the battlefield, managing battles and conflicts, and obviously military leadership. So that is the connect between Bhagavad Gita, Swami Vivekananda, and military leadership. We then asked him what are the teachings of Swami Vivekananda that he had implemented in military life. First of all, one of the main lessons that we learned from Vivekananda's work and life in terms of military leadership is that he had served the masses. So how did he do that? For that he had traveled all across the country and the world to understand the difficulties of the people, to understand the cultures, to understand the needs of the people. So that is what he also adopted in military leadership. So what you do is, at every level, especially at the higher levels, the three chiefs of the armed forces, the Army, Navy and the Air Force, including our subordinate commanders, are traveling all the time to meet our people who actually are deployed at various locations to be prepared operationally to look after the security concerns of the nation. As I took over as the Chief of the Air Staff in January this year, it was the worst time in terms of the winter months, and I decided to travel across and visit my people, the air warriors, located at the worst and most difficult posts in the border areas, Leh, Ladakh, Thois, base camp in the Siachen. And when I went there, I realized that they are so happy that the leader is here alongside them to look after their requirements, to look after their welfare. So that is the way we have also progressed, the way Swami Vivekananda had done it in his own lifetime. We then went to ask him that Swamiji always used to say, Sirdar wahi jo Sardar. A person who is willing to lose his head, as it were, can be a good leader. A person who is who does the ultimate sacrifice. Now, how does this teaching work on the battlefield? Ranbhumi mein ye, how does it work? Yeah, absolutely apt, especially for military leadership, because only when you are ready to sacrifice your own life while leading into battle can you actually lead. So whatever Swami Vivekananda said in this regard is very, very relevant in any military leadership. Another important point about training for leadership in the armed forces, this idea that we have actually learned and always adopted from Swami Vivekananda's life and works is that you need to sacrifice yourself. You must be ready to sacrifice and work for the upliftment of the masses and the country. Well, that's an absolutely remarkable statement from him. And what I would like to know now, whether he had a special message for our youth. And this is what he said. We must have confidence in ourselves, self-belief, look at the strengths of our culture and work selflessly, work to sacrifice your comfort and serve the nation, serve the poor people. And for that, you have to be a good professional yourself, first of all. So you have to be exclusive, like the Indian Armed Forces are, that they're totally exclusive by their profession, but they're always inclusive in looking after the interest of the country and looking after the people of the country. So that is the message I think Swami Vivekananda always gave to the nation and to the youth. And I'll just conveying his message to the rest of the nation. Thank you. And all that's left for me to do is to, on all our behalves, thank Mr. Raha
हमें इतना कुछ बताने के लिए। महाराज जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि लीडर्स on a bit of an ego trip, वो अपने आप को दूसरी स्पीशीज समझते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि एक सही लीडर को उनके फॉलोअर्स या टीम मेंबर्स के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? स्वामी विवेकानंद यही मानते थे कि लीडर में नम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी इज़ अ वेरी ग्रेट क्वालिटी, और दूसरा वन हु कैन ओबे ही ओनली कैन कमांड। Go on, I'm going to hit the ball towards you. Yes, sir. I have another question. Can a leader be a real leader even without a platform or a proper position or any written power in hand? Yes, very true, very good question. You see, it is the number of emotional circles that you have created. कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई पावर पोजीशन नहीं रहता। एग्जाम्पल, आपके घर में छोटी बेबी है, सबका अटेंशन उस पर है, उस पर कोई पावर पोजीशन है नहीं, परंतु वो इतना लविंग है और सो इनोसेंट एंड सो मोल्डेबल एंड सो फ्लेक्सिबल कि सब वो बेबी को लेना चाहते हैं। Sir, I just want कोई to पावर पोजीशन उसके पास नहीं है। Sir, स्वामी जी कहते थे कि a leader is one who leads like a baby. So is it That is why I That's gave what the he said. example. He leads like a baby in the sense that he doesn't have any requirement. At the same time, he is so loving and so serving and so open to all that everybody wants. That is the True. thing that Swami ji wanted to say. Thank you. पर आजकल के ज़माने में ये सर्वेंट लीडरशिप की बात जो हम कर रहे हैं, इज इट रेलिवेंट? Oh, most relevant. Not only that, it is more relevant than it was yesterday. As I told you, नो, इट्स इम्पोर्टेंट बट इट इज not रेलिवेंट। important. It is now. अभी पूरे अमेरिका में जो रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने सर्वेंट लीडरशिप की बात कही थी, आज सारे विश्व में उसको ले रहे हैं। और ये सर्वेंट लीडरशिप की जो बात इसको मिली है, रॉबर्ट ग्रीनलीफ को, उसको भी एक कहानी से मिली कि एक लियो नाम का एक नौकर एक टीम के साथ जाता था और वहाँ पर मैं सबकी सेवा करता था, और जब तक कि वो सेवा करता था बहुत सब लोग अचानक एक दिन लियो गायब हो गया। बस आगे की जर्नी नहीं हो पाई, लियो के बिना नहीं चलेगा। लियो के पास पावर पोजीशन कुछ नहीं था, पर वो इसकी एक ही खासियत थी, सबकी सेवा करता था। बाद में पता लगा लियो एक बहुत बड़ा सन्यासी था, बहुत बड़े सन्यासी संघ का महंत था, पर अपनी सर्वेंट लीडरशिप को प्रैक्टिस करने के लिए वहां आया था। बट ही बिकेम सो मच एक्सेप्टेबल एंड सो लविंग टू ऑल कि उसके बिना फिर सबकी जर्नी नहीं चली। विदाउट पावर पोजिशन इन दैट कंपनी ही बिकेम ऑलमोस्ट, उसके बिना चल ही नहीं सकता, ऐसी हालत उन लोगों की हो गई। पर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जब लीडर्स की बात कर रहे हैं, और ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इज इट ऑटोमेटिकली, डू वी ऑटोमेटिकली थिंक ऑफ देम एज मेन? नो, No, not at all. not at all. Of course you would say that, but I just but you know, I have एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि अगर हम leadership of countries we give it to women, will we have less wars? Is something that's always a question that I've always wanted answered, because I don't, I'm asking you this. Yeah. Surely, because they are, more emotionally, they are more sensitive to the sufferings of others. So we can expect that. And we have found also wherever women are in the top position, they are more caring. Caring, nurturing is their basic ingredient. So that is why we may expect much better leadership from women. Well, I think with that thought, we should all really pray that that happens soon. I've always thought women would make better leaders than men. ये तो मैं तो हर एक क्षेत्र में नहीं। बस मैं आई जस्ट एक लाइन बताना चाहूंगा एक बेंगली वर्स से, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে যে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে, which means when would we come across someone who would lead us not through his words but through his works. और इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आपसे आज विदा लेंगे कि the younger generation will get such leaders in every sphere
the micro level and at the macro level. Swamiji, thank you again for being with us. Thank you very, very much. Thank you, Mr. Raha, for giving us all his time when we interviewed him. Good day and take very good care of yourself and others. Namaskar, namaskar, and once again, namaskar. फिर बनाना है, फिर बनाना है, खुद बन के फिर बनाना है, सपनों को सच करके दिखाना है, सच करके दिखाना, सपनों को सच करके दिखाना है, अपनी सोच ये सच्चा और सरल हो, आज का कोशिश पे सुनहरा कल हो, कल हो, अपनी अंदर ही है सारी शक्ति, विवेकानंद की वाणियों